Hello students, so welcome back to the class of psychology. Let's continue our topic, the chapter number 3, the basis of human behavior. In our earlier modules, we studied about the nervous system as the biological basis of human behavior. So we studied the neuron, the central nervous system, the peripheral nervous system, and under the central nervous system, we studied the important part of our body, that is the brain and the spinal cord, which regulates our human behavior and human personality very well and control the many functions in our body. Now another very important part of the of biological basis of human behavior, that is the endocrine system. Endocrine system is also important, as the endocrine system work with the nervous system, okay, and both endocrine system and the nervous system both regulates the human behavior. In your earlier class, like in 9th 10th, you studied under the biology about the nervous system and the endocrine system. तो जो nervous system और endocrine system होते हैं वो अपने biological perspective से पढ़े हैं. Now in psychology we studied these system according to the biological perspective, that how they control the behavior, how they regulate and determine the various aspects of our behavior. So endocrine system also plays a very important role in our in human behavior. Okay, it regulates many functions, like जो हमारा मूड होता है वो हमारे बिहेवियर होता है, हमारे रिस्पॉन्सेज होते हैं, क्विक रिस्पॉन्सेज, स्लो रिस्पॉन्सेज, बहुत सारी हमारा बॉडी की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो एक दूसरे सबसे कनेक्टेड होती हैं. सो एंडोक्राइन सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम आर बोथ प्लेज एज अ कंजक्शन, ओके, और ये दोनों के दोनों साथ साथ वर्क करते हैं. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द ग्लैंड्स. First, when we start this topic, we need to understand what is the gland, because endocrine system formed by the endocrine glands. Okay, so first we need to understand the meaning of the word glands. So glands in organ which secretes particular chemical substances for use in the body or for discharge into the surroundings. Okay, so glands are a kind of organ which secretes chemical substances, and that chemical substances used by our body accordingly. जो भी डिस्चार्ज होता है उसको हमारी बॉडी यूज़ करती है. सो देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स इन आर बॉडी: एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड द हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स. ओके स्टूडेंट्स, so the exocrine glands. What is exocrine glands? Exocrine glands are glands that secrete their products into ducts. For example, sweat glands, salivary glands, mammary glands, stomach, liver. These all type of glands are the exocrine glands. Students, as I told you, gland secretes a chemical substance which is called as their product, and these exocrine glands have the ducts. Through ducts they produce their chemical substance, they secrete their chemical substance, okay, by the different glands. like जो sweat glands होती है उसमें ducts के through जो भी उनका प्रोडक्ट होता है, जो भी chemical substance होता है वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है. salivary gland जो होती है हमारी, वो सलाइवा को प्रोड्यूस करती है, और सलाइवा जो chemical substance, सलाइवा इज ऑल्सो केमिकल सब्सटेंस, और ये प्रोडक्ट है हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का. और जस्ट लाइक दैट mammary gland, stomach and liver all are secrete their chemical substance through the ducts. Okay, so these all are the exocrine glands because they are having a duct to produce their chemical substance, to produce their product. Okay, now the another is the heterocrine glands. So these are glands that perform both exocrine and endocrine functions. For example, pancreas. जैसे कि ये जो heterocrine glands हैं, these are the mix-up of the exocrine glands and the endocrine glands. So they perform the functions of the both glands, exocrine glands and the endocrine glands. Now another very important part is gland is the endocrine glands. As you all know, the topic's name is also the endocrine system. So you need to understand the meaning of the endocrine glands, and what is the endocrine glands. So glands that secrete their products directly into the blood rather than through a duct. Students, now these endocrine glands don't have any kind of duct.
okay, and the product which is produced by endocrine glands are known as the hormones. The secretion is known as the hormones. Because why we call the secretion, the chemical substance as hormone? Because they don't have duct, so the production, the chemical substance directly mix into the blood. जो blood flow होता है उसमें directly mix हो जाता है without a duct. So that's why we call the secretion as a hormone. जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के थ्रू जो भी सिक्रेशन होता है उसे हम हार्मोन कहते हैं. ओके, एंड दैट इज ऑल्सो अ केमिकल सब्सटेंस. फॉर एग्जाम्पल, the pituitary gland, pancreas, thyroid gland and adrenal glands. So students, this is in your book also. So we will study the endocrine glands in the detail. As you can see the picture also na, the pituitary gland, the hypothalamus, thyroid, adrenal cortex, pancreas, adrenal medullas, testes and ovaries. These all are the endocrine glands, examples of endocrine glands. Now in short we can say that endocrine glands are the ductless gland, okay, because exocrine glands are the having the duct, but endocrine glands are not having the duct, so they are called as the ductless gland. The chemical substance which is produced by these glands are known as the hormones. Because why we call the chemical substance as a hormone? Because hormones are circulated by the bloodstream. Because the lacking of ducts, the chemical substance directly mix into the blood. So these are known as the hormones. Okay, now students, these endocrine glands, the different endocrine glands na, form a endocrine system in our body, and which plays an important role, very important role, because the nervous system and the endocrine system दोनों आपस में मिलकर के हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शन, और वी कैन से द होल बॉडी जो होते हैं उसके सारे के सारे फंक्शंस को ये लोग रेगुलेट्स एंड कंट्रोल करते हैं. Okay, so now in the picture also, in this figure you can see the pituitary gland here, the pituitary gland, the thyroid gland here, thyroid gland, okay, the another is the pancreas, the another is the adrenal gland, students, you can see adrenal gland. Now the another is the gonads known as the ovaries and the testes. Now these you can see in the picture, in this figure also, that the location, the particular location in our body of these endocrine glands, okay, the pituitary gland, the thyroid gland, the adrenal, pancreas and the gonads. Okay, so students, now let's start with the first gland, it is known as the pituitary gland. Okay, pituitary gland and hypothalamus. So the pituitary gland or hypophysis is attached to the hypothalamus at the base of the brain. So the hypothalamus is the major integrating link between the nervous and the endocrine system. So we can say now, because in the figure you see na कि you have seen that pituitary gland situated in the अंडर द ब्रेन, बिल्कुल ब्रेन से कनेक्टेड होता है हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है. दैट्स वाई हाइपोथैलेमस इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू लिंक between the nervous and the endocrine system. Although the pituitary gland is sometimes called the master endocrine glands. Okay, so the pituitary gland known as the master gland also, and together the hypothalamus, the pituitary gland regulates virtually all aspects of growth, development, metabolism and homeostasis. So the function that is performed by the pituitary gland is are the growth, development, metabolism and homeostasis. Because स्टूडेंट्स, बिकॉज पिट्यूटरी ग्लैंड देखिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो करता है ग्रोथ के अंदर. ठीक है, तो कुछ जो इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स विच इज़ रिलीज बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल्स द ह्यूमन बींग्स ग्रोथ, ह्यूमन बींग्स हाइट. Okay, and the another important function of the pituitary gland is to control the hormone secretion of the another gland also. That's why it known as the master gland, because ये metabolism को, homeostasis को, development को control करता है. So the first very important work is performed by the pituitary gland is to control the growth of the human beings. Okay, at a particular time like in the childhood. Okay, and another very important function is performed by the pituitary gland is the development. Okay, like in your
puberty time, the secretion of the अनदर हार्मोन्स लाइक द गोनड्स होते हैं, उनका जो हार्मोन सिक्रेशन होता है उसको भी हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड ही होता है, वो रेगुलेट करता है। ओके, मेटाबॉलिज्म जो होता है, होम्योस्टेसिस जो होता है उसको भी कंट्रोल करता है। कैसे? जो हमारे और भी ग्लैंड्स है, लाइक हमारा थायराइड ग्लैंड है, उनके जो हार्मोन सिक्रेशन होते हैं उनको भी जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है वो ही कंट्रोल करता है। सो दैट्स वाई वी कॉल पिट्यूटरी ग्लैंड एज अ master gland. So the pituitary gland can be divided into the posterior pituitary and the anterior pituitary. So the posterior pituitary works as a unit with the hypothalamus, although the posterior pituitary does not synthesize its own hormone. Okay, so it does store and release oxytocin and antidiuretic hormone produced in the hypothalamus. देखिए, जो हमारा posterior pituitary जो gland होता है, it does not secrete any particular hormone, but it stores and release the hormones which is produced by the हाइपोथैलेमस। जो हाइपोथैलेमस होता है उसके पास जो हार्मोन्स होते हैं जिनको कि वो रिलीज़ करता है। सम टाइम हाइपोथैलेमस ऑल्सो रिलीज हार्मोन ओनली द हाइपोथैलेमस, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो हमारे हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड होता है। दैट्स वाई जो हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है वो वर्क करता है एज अ यूनिट ऑफ द हाइपोथैलेमस। ओके, सो दैट्स वाई वी कैन से कि जो हाइपोथैलेमस होता है इट रिलीज द हार्मोन्स लाइक ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच। सो व्हाट OT controls? Oxytocin controls the uterine contractions during delivery and milk ejection during breastfeeding, and the ADH causes retention of body water, controlling the body's water balancing mechanism. It is very important, students, to understand that posterior pituitary gland never release any hormone. It only store and release the hormones which is produced by the hypothalamus, because hypothalamus connected and work as a unit of posterior pituitary. Okay, and the name of the hormones are OT and ADH. Now the anterior pituitary. The anterior pituitary secretes hormone that controls a wide range of bodily activities. Now the anterior pituitary secrete hormones. Okay, so the hypothalamus regulates the anterior pituitary by producing, releasing हार्मोन्स। जो अब यहाँ पे भी जो हाइपोथैलेमस होता है वो ही हमारे जो एंटीरियर पिट्यूटरी के जो रिलीजिंग हार्मोन्स होते हैं उन्हें रेगुलेट करता है। पर जो एंटीरियर पिट्यूटरी के जो हार्मोन्स क्या होते हैं, दैट स्टिमुलेट रिलीज ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन्स एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स दैट सप्रेस रिलीज ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन्स। जो भी हार्मोन्स होते हैं जो कि अनदर ग्लैंड्स के थ्रू भी रिलीज़ किए जाते हैं उनको भी कंट्रोल करने का काम कौन करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ही करता है। ओके, सो दैट्स वाई द एंटीरियर पिट्यूटरी हैव 5 प्रिंसिपल टाइप्स ऑफ सेल्स विच सीक्रेट 7 मेजर हार्मोन्स। अब ये जो होते हैं ये 7 मेजर हार्मोन्स को अलग अलग ग्लैंड्स के थ्रू रिलीज करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। ओके स्टूडेंट, सो नाउ इन शॉर्ट वी कैन से द पिट्यूटरी ग्लैंड is known as the master gland, situated just below the hypothalamus. Okay, so the hormone is secreted by the TSH and the ACTH, thyroid stimulating hormone. As I told you ना, anterior pituitary gland stimulates, कुछ stimulating hormones release करता है, that is the thyroid stimulating hormones. Okay, and ACTH, adrenocorticotropic hormone. Okay, which controls ग्रोथ हार्मोन्स, रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स। ग्रोथ हार्मोन्स को कैसे, एज आई टोल्ड यू ना, दैट पिट्यूटरी ग्लैंड परफॉर्म अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द हाइट। जो हाइट हमारी बढ़ती है या जो कम छोटी रह जाती है वो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड ही रेगुलेट करता है। एंड द अनदर जो ग्रोथ हार्मोन होता है उसके थ्रू चाइल्डहुड में, पर्टिकुलरली चाइल्डहुड में ही हार्मोन सिक्रेशन के थ्रू ये क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड उसको कंट्रोल कर लेता है। एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज द रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स जो होते हैं उन्हें भी रेगुलेट्स करता है। एज आई टोल्ड यू द गोनेड्स के अंदर जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन होते हैं, टेस्टिस और ओवरीज जो होते हैं उनके टाइम पे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे ही उन हार्मोन्स को रिलीज करके हमारे बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को रेगुलेट्स करता है। सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर द पिट्यूटरी ग्लैंड।